हेलो एवरीवन तो चलतु नेक्स्ट टॉपिक को जीवा जो कि आपंकर बहुत रिक्वेस्ट था कि फ्रेंच रिवोल्यूशन पर चलते मैडम टिके डिस्कशन करनी तो 50 टी क्वेश्चन चलते 10 मिनिट डिस्कशन करवा स्पीड जदि होची आप स्लो करके पछरे देखिपारे कि निहाती भाव में ट्राए करूँ के स्पीड आपने एक्यूरेसी सहित स्पीड को मेंटेन करने चलतु बहुत कम समय अधिक क्वेश्चन करिया बट ता पूर्व आपने टेलीग्राम चैनल जॉइन करेंगे एठी आपण माने देखंतु स्टेट बीएड 2026 को जॉइन करेंगे जोटी कि आपण सब जिनस माने पीडीएफ जहाँ भी होचे ताको आपण मु शेयर कर देबी से टेलीग्राम चैनल ता सहित आपण 𝐶𝐾 मैम को जॉइन कले मोर रेगुलर क्लास रो अपडेट आपण सेठी पाई परिबे क्लास रे क्विज होची पीडीएफ होची सब किछि आपण एठी पाई परिबे देन आपण नंबर को सेव करनी थांतु नंबर रे आपण माने डायरेक्टली कांटेक्ट कले मु ही आपण को रिप्लाई देबी तो एठी आपण माने कांटेक्ट कले सब जिनस आपण को टाइम रे मिल जिवो माने कथा हला कि जो भी आपको असुविधा होची कि आपण टीचिंग रिगार्डिंग किछि आपको डाउट अच्छी कि आपण चाहू जदि कोनोसी बैच जॉइन करिया को सीधा सड़क आपण एठी कांटेक्ट करि परिबे तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन को जिबा एठी व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम एंड ओल्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर द 19 ईयर 1789 रू तो एठी आंसर कोन जिबा आंसर जो आपन ऑप्शन बी ओल्ड रेजिम को जाय तापर असुची व्हिच फ्रेंच किंग असेंडेड द थ्रोन इन 1774 एंड फेस्ड द ब्रंट ऑफ 1789 रेवोल्यूशन तो किए फेस करथले तो ऑब्वियसली लुई 16 हम एठी कहि परिबा तापर असुची टू व्हिच रॉयल फैमिली और डायनेस्टी डिड किंग लुई 16 बिलोंग को डायनेस्टी को बिलोंग करछन तो एठी मोर आंसर कोन ऑप्शन सी बॉर्बन डायनेस्टी क्लियर होची तापर आसीबा व्हाट वाज द एक्जेक्ट पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इन 1789 अ मेजर सर्ज दैट कॉज्ड सिवियर फूड शॉर्टेज को जिनसा पई हेतिला तो एठी मोर आंसर हेजबो केते होची केते लोक ना 28 मिलियन ओके 28 मिलियन हम एठी आंसर करबा देन देखिबा फ्रेंच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चरली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सोशल क्लासेस और स्टेट केतेटा भागरे मोर स्टेट रे डिवाइड हेतिला तो ये होची मोर तीनटा हेतिला तापर आसुची व्हिच ग्रुप ऑफ पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड द फर्स्ट स्टेट इन द प्री रिवोल्यूशनरी फ्रेंच सोशल ऑर्डर तो किए प्रथमे करथिले द क्लर्गी आमे जहा को कहूचे तांकू कहि परिबा तापर आसुची अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द फ्रेंच पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पीजेंट्स ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी तो ये रहबे आपनकर 90% आपनकर थिले देन आसुची व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायरेक्ट टैक्स पेड एक्सक्लूसिवली बाय द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट टू द स्टेट तो डायरेक्ट टैक्स माने टाइली आमे ताको कहूचे देन आसीबो व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिलीजियस टैक्स एक्सट्रैक्टेड बाय द कैथोलिक चर्च फ्रॉम द पीजेंट अमाउंटिंग टू 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ए जो जिनस रहउची तो याको आमे कोन कहबा टीथ कहबा आपण प्रोनाउंसिएशन जहां भी कहउछन कहि परिबे टीथे भी आमे कहि परिबा देन देखिबा व्हाट करेंसी यूनिट वाज यूज्ड इन फ्रांस बिफोर बीइंग कंप्लीटली अबॉलिश्ड इन 1794 तबरे ये होची आपनकर लिवरे कहबो बा लिवर हु रोड द हाईली इन्फ्लुएंशियल बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एटा क्वेश्चन आपनकर भी आसे तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जदि कहउची असर्टिंग दैट पीपल हैव अ राइट टू चूज देयर गवर्नेंस ए बहिरा थीम भी पचार तनु किए लिखितिले तो एठी आंसर भी जीन जैक्स रूसे कारण रूजेन को आमे जेमतेले भी मन रखुचे रोसेन को कारण से हमर फादर ऑफ माने रेनासा पीरियड कथा हिसाब रे हम जदि कहबा यांको रेफर करा जाय देन देखिबा व्हिच फिलोसोफर रोट द स्पिरिट ऑफ द लॉस जदि कह जाउची एडवोकेटिंग फॉर अ क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट तो ये रोज आपनकर मॉन्टेस्क्यू कहितिले आज पर्यंत में ताको माने यूज करिया को चेष्टा करछे देन असले हु रोट द पॉलिटिकल पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट जदि लिखिचंती व्हिच बिकेम एन ओवरनाइट मैनिफेस्टो फॉर द कॉमनर तो ये रहउची आपनकर आबेसीएस ओके then as in his work two treaties of government who sought to refute the absolute divine right to the monarch तो ये रहले आपनकर जॉन लॉक क्लियर होची सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहउची आपण मन देखंतु केते आपण आंसर करि परछंती तापर आसे व्हाट नेम इज गिवन टू द एक्सट्रीम इकोनॉमिक कंडीशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर डीपली एंडेंजर्ड तो ये रहउची मोर सबसिस्टेंस क्राइसिस हमें कहि परिबा देन असुचन व्हाट एक्जैक्ट डेट डिड किंग लुई 16 कॉल द असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस तो ये होची मोर 5 मई 1998 मसिया रे आपनकर हेतला माने 99 मसिया रे Then Asuchi, where did the representative of the third state assemble on 20 June 1789 after being locked out of the meeting hall? तो ये रोच आपनकर इंडोर टेनिस कोर्ट रे आपनकर हितला देन असुची हु वर द टू मेन फिगर्स हु लेड द न्यूली फॉर्म्ड नेशनल असेंबली एट द टेनिस कोर्ट ओथ तो ये रोचंदी मिराबियो एंड अबिसियस On what historic date did an angry agitated crowd storm and demolish the royal fortress prison known as the Bastille? तो एटा की करथले केते बेले करथले ना 14 जुलाई रे करथले 1789 से दिन ही एक्चुअली मेन आपनकर इंपोर्टेंट तापर असुची why was the Bastille fortress hated by the common people of France कोन पई घृणा करिवे तो naturally it stood for the despotic power of the king तनो सेही जिंस को ऑब्वियसली घृणा आसीबो तापर असुची which state has the largest coal reserve in India जदि largest coal कहबा त ये होछ आपनकर झारखंड को कहजिबो देन असुची what did the national assembly pass on the night of 4th August 1789 तो ये रहबा आपनकर बी decree abolishing the feudal system of obligations and taxes देन असला in which year did the national assembly complete the first draft of the French constitution तो ये जो जिंस प्रथम ड्राफ्ट को होछ माने एठी हमर 1791 को मने रखिबे तापर असुची कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन व्हिच न्यूली फॉर्म्ड लेजिस्लेटिव बॉडी तो ये रहउची मोर नेशनल असेंबली नुआ हमर फॉर्म जोटा हेची बॉडी तापर असुची अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 हु वर द क्लासिफाइड एज एक्टिव सिटीजन विद द राइट टू वोट तो राइट टू वोट जतले कहउची माने मेन अबव 25 हु पे टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबर वेज से मानन कथा कहजिबो देन व्हिच फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट
was drafted at the beginning of the Constitution of 1791. तो कौन है ताले the Declaration of the Rights of the Man and of the Citizen. Then आसुची who wrote the revolutionary patriotic song Marseillaise which later became the national anthem of France. तो ये रहुची आपनकर Roger the Red. Next देखिबा what was the name of the political club that became the most successful rally point for radical revolutionaries. तो ये रहुची आपनकर Jacobean club को आजिबो ठीक अछि. Then देखिबा who emerged as the principal leader of the radical Jacobean club. तो ये रहुची आपनकर Maximin Robespierre को हमें कहि परिबा. What name was given to the Jacobians because they wore long trousers instead of the fashionable knee breeches. तो तांको हमें कोन कहि परिबा तांको हमें कहि परिबा सैन कुलोटी. ओके तो आज भी से भला ड्रेस आपनकर कुलोटी कह जाउची जोटा कि आपण मान जानिथिबे बहुत भलो कथा. Then आसुचन September 21 1792 the newly elected assembly called the convention passed a historic decree to do what? को जिनसा पाई करा है ना abolish the monarchy and declare France a republic. Then as in January 1793 King Louis XVI was publicly executed at the Palace de la Concorde at what charge? Co charge definitely treason charge. Then as who was the Austrian princess and queen consort of Louis XVI who made the same fate of execution via guillotine. The guillotine जरिया को आउची माने Marie Antoinette को आजिबो. तापर आसुची which specific period in French history is formally referred to as the reign of terror. एटा भी important question आपनको reign of terror जदि को आजिबो ता माने होची 1793 to 94 को हमें कहि परिबा. तापर आसुची what device consisting of two poles and a crescent blade was introduced during the revolution to carry out execution. तो ये रोची आपनकर guillotine. Okay guillotine टा important आपण definition मन रखिबे. Who was the inventor of the execution device known as guillotine? तो guillotine को किए invent करथिले ना डॉक्टर गुलोटिन ही तांको नारे हेची. Then as following the fall of Robespierre Jacobin government, political power shifted into the hands of which wealthy class? तो कहा को जाइथिला ना middle class bourgeoisie को जाइथिला. What was the name of the executive body consisting of 5 members that ruled France after the fall of the Jacobins? तो ये रहला आपनकर the directory. तापर आसुची political instability within the directory ultimately paved the way for the rise of which military dictator? तो ये रहबे आपनकर Napoleon Bonaparte. What was the name of the political club formed specifically by women to advocate for equal political rights? Equal rights को था माने ये Society for Revolutionary and Republican Women. Then as in which year did women in France finally win the legal right to vote? तो ये रहबे आपनकर 1946 1946 मसिया. Who was the politically active French playwright who protested against the exclusion of women from the Declaration of Rights? तो ए भला जिंस आदले को तो यांको ना को मन रखिबे Olympe de Gouges. Okay. Then asle what name was given to the vast landed estate owned by lords and worked by peasants in the feudal setup? तो ये होची आपनकर manors. Then asle which prominent French Caribbean colony were vital suppliers of commodities like tobacco, indigo, sugar and coffee? तो ये रहबे आपनकर Martin Q, Guadeloupe and San Domingo. Clear हला? तापर आसुची which legislative body first passed a law to emancipate all slaves in French overseas possessions in 1794? तो आपनकर आंसर हे जिवो National Convention. Who reintroduced slavery in French colonies 10 years after it was initially abolished by the convention? तो 10 वर्ष पर पुणी आउथरे इंट्रोड्यूस हेछि माने Napoleon Bonaparte को कथा कहजिवो. In which year was slavery finally and permanently abolished जदि कहजिवो ताले से हेबो हमर 1848 मसिया. Then as in which year did Napoleon Bonaparte officially crown himself emperor of France? निजो को निजे जोडा emperor कहउछि ताले हेबो हमर 1804 मसिया को कहजिवो. In which famous battle was Napoleon Bonaparte finally defeated by allied European forces in 1815? तो ये हेले Battle of Waterloo कथा मने रखिबे. तापर आसुची which two prominent Indian historical rulers were deeply inspired by the progressive ideas radiating from the French Revolution? तो ये थिले आपनकर टिपू सुल्तान और राजा राममोहन राय. very important आपको आपण मने मने रखिबे. Then asle what core trio of revolutionary values did the French Revolution leave behind as a legacy for the modern world? तो ये रोची आपनकर liberty, equality, fraternity जोटा कि आज पर्यंत आमे पॉलिटी रे भी पढुछु. बुझी पाले तो ए थिला आपनकर जिंस बाकी जो माने भी इंटरेस्टेड अछंती डेफिनेटली देखि पारथबे आपनकर एंती मासिकिया 3 मासिकिया वर्षिकिया प्लान रहउची ए वर्षिकिया प्लान आपनकर एबे पई ऑफर अछि जोटा कि 1799 जगह 999 तो डेफिनेटली आपण मान जदि चाहुचंती चेकआउट करिया पई तले कोड को अप्लाई करि परबे ईजेडसाई कारण ए ईजेडसाई कोड अप्लाई करिके आपण माने मैक्सिमम डिस्काउंट रे जे कोनसे बैच रे आपण एनरोल हे परिबे कथाला सिंगल सब्सक्रिप्शन थरे ही पेमेंट करिवे किंतु बैच आपनकर मल्टीपल रहउची सब जिंस को गोटे थर रे आपण एक्सेस करि परिबे तो 50 थर 50 प्रकार रे पेमेंट पई जे माने नथिबो झमेला ठीक अछि तनो बुझी पारथबे बाकी आपण माने नंबर को सेव करने नंबर रे आपण मानकु जहाँ भी असुविधा होची आपण माने मेसेज करि परिबे माने पर्टिकुलरली जदि आपनको बैच नेबार अछि कारण ऑफर आपनकर सरी जिवो तो जदि ऑफर नेबार अछि तो निहात बारे एई 2 दिन भितर ही आपनको चेकआउट करिवार अछि बाकी टेलीग्राम चैनल जॉइन हेबे जोटी आपनकर स्टेट बीए टेलीग्राम चैनल पीडीएफ पढिजो बाकी जीके बाय साई मैम रे रेगुलर आपण माने क्लास अपडेट पई करि परिबे कांटेक्ट तो आशा करछि आपनको टॉपिक भल लागिथबो नेक्स्ट टॉपिक कोन दरकार कहिबे न ऑनलाइन एतिकी ही जिंस रहउछि बाकी ऑल द वेरी बेस्ट सब जिंस को भल से पढि के जानतु डेफिनेटली एग्जाम आपण क्रैक करिवे थैंक यू।